All right, we're ready to go. Good evening, everyone, and a very, very warm welcome for today's session. So, as always, we repeat what we have done before. We're going to do that again today. So, ये एक नया सीरीज है. हम लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ फॉरगिवनेस एंड कार्मिकली कैसे हम अपने प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं वो समझ रहे हैं. So, we have been doing the session for last 1 week. We have already discussed how to use the law of karma for your benefit, how it can harm you, how you can get, so-called punishment, and how you can get the benefit. Both we have discussed already. And last Friday, we also discussed how to heal financial karmic problems. We also discussed how to heal physical health related karmic problems. Now, today, the main session is on relationship, how to heal relationship issues, relationship problem, which is happening to you at a karmic level. So you know that you are suffering because of your karma, how to heal that. Now, before we move on to the main aspect of it, as I always do, I will like to do a recap. क्योंकि बहुत जन होते हैं जो आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हो या आपने पहला 2 सेशन नहीं अटेंड किया है, तो आप नहीं समझोगे कि अचानक से ये कहाँ से आ रहा है. So I always do a recap. So that is what I'm going to do in 2-3 minutes. So the law of karma, that's the basic law which governs the universe. It does not only govern your life and my life, it governs the whole universe. So if you believe in the religion, if you believe in the traditions, then you open Bhagavad Gita, you will see everything is written as per the law of karma. So even Sri Krishna himself also said that even I am not outside the law of karma. श्री कृष्ण को भी अपने कर्म के हिसाब से बहुत कुछ भोगना पड़ा है. So no one is outside the law of karma. Forget you and me. We are of course governed by the law of karma. Number 2, it is universal. तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन से देश में हो, आप कौन सी भाषा बोलते हो, whether you are a male, whether you are a female, whether you are a aged person, whether you are a newborn baby, you are governed by the law of karma. So it is universal. ये मत सोचेगा कि मैं एक बहुत सिंपल इंसान हूं तो मेरे को तो लॉ ऑफ कर्मा फॉलो नहीं करना है, या मैं एक बहुत पहुंची हुई हस्ती हूं तो मेरे को तो लॉ ऑफ कर्मा फॉलो नहीं करना है. Doesn't happen. It's universal for everyone. Now, what is this law of karma? Very simple. Whatever you sow, you reap. आप जैसा दोगे, आपको वैसा ही मिलेगा. There are 3 rules of the law of karma. Rule number 1, which I just said, it is exact in nature. Whatever you will sow, you will receive. If you sow mango seed, you will receive mango. If you sow cactus, you will receive cactus. Okay? The second rule of law of karma, the multiplier effect. आप एक सीड सो करोगे, आपको उससे एक बड़ी सी पेड़ मिलेगी, वो बड़ी सी पेड़ आपको बहुत सारा फल देगी. So you give 1 chocolate to someone, you will get 10 chocolate. But if you give 1 Karela to someone, you will get 10 Karela. Okay, so you choose. What do you want to drink? You want to have mango shake or you want to have a Karela shake? Okay. Number 3, the third rule of law of karma, lag time. You will not get it back immediately. Mostly, you will not get it back immediately. You will get it back when the fruit mature. तो ऐसा नहीं होता है ना, मैंने आज सुबह एक सीड डाला, उसमें से दोपहर तक में पूरा पेड़ निकल के आ गया और शाम को मैंने मैंगोस तोड़ के खा लिए. ऐसा नहीं होता है ना. I have to wait for the time to mature. So the law of karma will give you back your returns when it matures. Whether good or whether bad. Both, हाँ, both. सिर्फ good नहीं, सिर्फ bad नहीं. तो आप कुछ अच्छा भी करोगे अगर आप आज डोनेशन कर रहे हो, which we discussed on Friday, how to heal the law of karma, how to heal the financial karmic problems. If you do donations today, maybe after a few months, you will start getting back a lot of money.
You will have increment, you will have salary hike, you will have more profitability. Your income will increase after a few months, after maybe a few years, depending कि कितना karma neutralize करना है. If you ask me, I don't know. I have no clue, ma, because I do not keep records of anybody's karma. Who keeps it? They keep it. Somebody called, in the Hindu mythology, it is written, somebody called Chitragupt. So Chitragupt keeps all the records. I have not met Chitragupt personally, so I have no clue and no hand in that. Yes, non-pranic healers can join. Please forward the details to non-pranic healing friends as well. So many people ask me, Pyali di, heal करने में कितना time लगेगा? With folded hands, I'm telling you, I have no idea. I have no clue. Because as I said, I do not keep track of your karma. Who keeps it? Chitragupt keeps it. Someone up there, sitting up there, keeps it. I can only try my best to give you the idea about it, right? So this is the rules of law of karma. Now let's come to relationship karmic issues. If someone is facing a relationship karmic issue, then how have you got into the problem and how can you come out of it? Yes, very interesting question. Can we scan? If you are a pranic healer, yes, you can scan to some degree. Okay, to some degree, not fully. I cannot say that the 10th of July, your karmic problems are coming to an end. I cannot say that. We can only scan as pranic healers to a certain degree that how much karma do I need to get this and how much karma do I have and how much karma do I need to generate. So it is like a process of scanning, and you can scan as a pranic healer. If you have good scanning powers, you can scan to a large extent very, very accurately. But even that will depend on your karma. Whether you will be able to scan accurately or not, whether you will be able to understand accurately or not, it will also depend on your karma. Let me tell you one big, big thing. If today you are here in this session, it is your karma. If you are listening to me and if something strikes you and something changes in your life, that is also your karma. There are many, many people who will be missing today's session and maybe they really need it. That is also karma. So everything depends on the laws of karma. That is the reason why I constantly keep on saying, and if I'm personally counseling someone, I always say this, do not leave any scope to generate positive karma. अगर आपको एक स्कोप मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, एक चांस मिल रहा है कि कहीं पे किसी को हेल्प करके कुछ अच्छा करके कर्मा जनरेट कर सकते हैं, अच्छा कर्मा, उसको खोइए मत, उसको गवाइए मत. भले ही 2 दाना कम खाना खा लीजिए, 2 पैसे कम कमा लीजिए, 2 घंटा कम सो लीजिए, जरूरत पड़ने पे जो करना है करिए, पर गुड कर्मा कमाने का अगर मौका मिल रहा है, डू नॉट लीव इट, because you don't know when you will need that good karma. It is like a bank account balance. So you must have a lot of karmic balance in your account. Now let's come back to the relationship healing. Now let's understand the two aspects of relationship problem. Number one, at all relationship problem क्यों है? Why am I the one who is facing the relationship problem? ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे पहला सवाल है, and maximum लोगों के मन में होगा, यार मेरे साथ क्यों? Why me? I have been such a loving person. मैंने अपना 100% दिया, मैंने अपना best possible कोशिश किया. I have never hurt people, or maybe I try to keep people happy. या किसी एक रिलेशनशिप में हमको लगता है हमने तो अपना 200% दिया है. सॉरी, देन व्हाई एम आई सफरिंग? मेरे साथ ही रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्यों? नाउ फर्स्ट एस्पेक्ट इज दैट व्हाई मी. सो बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, I again with folded hands, I will request you, do not get me wrong. I don't have any intention of hurting you by any means. I, as it is, don't even know all of you personally, right? So I do not have any intention of hurting you. I just can show you a mirror.
क्योंकि अगर मैं आपको चॉकलेट्स ही खिलाती रहूंगी तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपके लाइफ में करेला क्यों आ रहा है, राइट? मैं जब तक आपको करेला टेस्ट नहीं कराऊंगी आप कभी नहीं समझ पाओगे कि मेरे प्लेट में करेले क्यों सर्व्ड हो रहे हैं। मैंने ऑर्डर तो चॉकलेट्स का दिया था। तो आई हैव टू बी द पर्सन हु हैज टू शो दैट करेला टू यू। अदरवाइज मैं बहुत स्वीट स्वीट सेशंस ले सकती हूँ, लेकिन वो स्वीट स्वीट सेशन से आपको फायदे नहीं होंगे। ये करेले टाइप सेशन से ही फायदा होगा। Okay, so again with folded hands, do not get me wrong, I have no intentions of hurting you. But the crux of the story, the truth of life is, if you are facing a problem, it is your own karma which has attracted that problem. Nobody else is to be blamed. Nobody else has a hand in it. Nobody else is responsible for it. आप सोच सकते हो मेरी जिंदगी खुश नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत बुरे हैं। मेरे मम्मी पापा ने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा। मैंने अपने मम्मी पापा के बीच में कभी हैप्पी रिलेशनशिप नहीं देखा, इसलिए मुझे हैप्पी रिलेशनशिप क्या होता है पता नहीं है। यू कैन ब्लेम योर पेरेंट्स। यू कैन से आई डोंट हैव अ गुड हस्बैंड, आई डोंट हैव अ गुड वाइफ। मैं तो जो बोलती हूँ मेरा हस्बैंड उसका उल्टा बोलता है। द हस्बैंड कैन से माई वाइफ इज अ गुड फॉर नथिंग, आई लव हर सो मच, शी डज नॉट लव मी एट ऑल। You can again say that, this is my 49th boyfriend. The first 48 have all ditched me. They were all bad people who ditched me. You can say that I am such a good friend. I am a friend indeed. जब भी मेरे दोस्तों को मेरी जरूरत पड़ती है मैं खड़ी होती हूँ, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ती है मेरा कोई दोस्त मुझे हेल्प नहीं करता। All my friends are selfish people. You can say anything and everything. आप किसी को भी ब्लेम दे सकते हो, आप किसी को भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? ब्लेम देके, रिस्पॉन्सिबल ठहरा के फायदा क्या होगा? सफर तो आप ही कर रहे हो ना। यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ वॉट एवर यू हैव सीन विथ योर पेरेंट्स। यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ योर स्पाउस। यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स। यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। सफरिंग तो आप ही को हो रही है। सो नो मैटर whom you blame, it is of no use. Much rather, if you can understand that it is my own karma because of which I am suffering, then you have a good chance of healing that karma. आप तब तक कार्मिक प्रॉब्लम को हील नहीं कर पाओगे जब तक आप दूसरों को ब्लेम करते रह रहे हो, क्योंकि जैसे ही आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो आप एक नया नेगेटिव कर्मा जनरेट कर रहे हो। पुराना तो अपनी जगह है ही, यू आर जनरेटिंग अ न्यू नेगेटिव कर्मा बाय ब्लेमिंग अदर्स। Nobody is responsible for whatever you are facing, good and bad, huh? Good and bad. If you have a fantastic family, if you have very loving, very caring, very rich, very generous mother and father, it is your good karma that you have attracted them. If you have a super loving, romantic husband or wife, it is your good karma that you have attracted them. If you have two good friends who never leave you, it is your good karma who has attracted them. वो क्रेडिट भी किसी और को मत दीजिए कि अरे मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं। ये आपका अच्छा कर्म है कि आपने ऐसे फ्रेंड्स को अट्रैक्ट किया है। तो जैसे गुड कर्मा का क्रेडिट आपका है, बिल्कुल वैसे ही नेगेटिव कर्मा का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो खुद ही लेनी पड़ेगी ना। सो द फर्स्ट पॉइंट इज आई एम रिस्पॉन्सिबल for whatever is happening in my life, good or bad. So relationships, if I am going through a tough relationship, point number one, I am responsible for it. How am I responsible? Maybe I have made some mistake in this incarnation. Maybe I have made some mistake in previous incarnation. अगर आज मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, अगर मेरे बच्चे मेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं, even if, प्लीज अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे आपको हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपके बच्चे आपको अनाथ आश्रम में छोड़ दे रहे हैं या वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं, सॉरी, वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं, अगेन इट इज आवर ओन कर्म। हमने इस जन्म में या प्रीवियस जन्म में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हमने ऐसा ही किया होगा। एक लॉ ऑफ कर्मा इज एग्जैक्ट, इट विल कम बैक इन द सेम फॉर्म।
आई नो वेरी मच, इतना पेन होगा किसी भी माता पिता को अगर उनके बच्चे उनको वृद्धाश्रम में अकेला छोड़ दे तो। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को ब्लेम करोगे, कर्स करोगे, तो आप एक नया नेगेटिव कर्मा जनरेट करोगे। आप उस पुराने वाले नेगेटिव कर्मा को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाओगे। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर हीलिंग इज accept that it is my karma. If children are going through a bad relationship, it is their karma. It is the children's karma. Remember, every soul has their own karma. The parents can, up to a certain degree, affect the karma of the children. पेरेंट्स अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं तो एक सर्टेन डिग्री तक वो बच्चों को गुड कर्मा दे सकते हैं। अगर पेरेंट्स बुरे हरकतें कर रहे हैं, बुरे कर्मा जनरेट कर रहे हैं, तो एक डिग्री तक वो अपने बच्चों को बुरा कर्मा अफेक्ट करेंगे, लेकिन नॉट कंप्लीटली। व्हेन योर चिल्ड्रन टुक बर्थ, दे ब्रॉट अ बैंक अकाउंट ऑफ कर्मा विथ देम। सो एज पेरेंट्स वी कैन नॉट डू मच। हम उनको ब्लेस कर सकते हैं, हम उनको हील कर सकते हैं, हम उनको सही सलाह दे सकते हैं, बट दे विल हैव टू गो थ्रू देयर ओन कर्मा। You are not completely responsible for them. So coming back to self right now, first point, again repeating, if you are suffering with a relationship problem, find out where you have gone wrong. If it is in this incarnation, you can find it out more easily. आप सोच सकते हो कि अगर मुझे मेरा बॉयफ्रेंड डिच कर रहा है, मतलब हो सकता है मैंने किसी को तो डिच किया है, हो सकता है बॉयफ्रेंड को नहीं, मैंने ऑफिशियल एस्पेक्ट में किसी को डिच किया होगा, उसका रिटर्न आ रहा है फ्रॉम अ बॉयफ्रेंड डिचिंग मी। Check. If you have a very rough husband or a wife, someone who hits you, physically hits you, tortures you, think, क्या आप किसी के ऊपर हाथ उठाते हो? Maybe you're hitting your children. आपका हस्बैंड आपको मार रहा है, आप अपने बच्चों को मार रहे हो। You're creating a karmic link. Think about it, inner reflect. If you have a very, torturous or very dominant in-laws, आपके इन-लॉज आपको सांस भी नहीं लेने देते बिना परमिशन के, थिंक, आर यू बीइंग डोमिनेंट विद समवन? मे बी आप अपने ऑफिस में अपने कलीग्स को, अपने एम्प्लॉइज को सांस भी नहीं ले दे रहे हो बिना परमिशन के। If it is related to this incarnation, you have a good chance of identifying a mistake. Identify it, heal it. I'll come to the healing part. If it is connected to the previous incarnation, then I'm very sorry to say, शायद इतनी मेमोरी सपोर्ट नहीं करेगी। मेरी तो नहीं करती है कम से कम। I can't remember anything which I did in my past incarnations. तो उसके लिए क्या है? गेस वर्क, कि कुछ तो किया होगा भाई जिसके वजह से आज ये हो रहा है। पकड़ के अनकंडीशनल अनबायस्ड फॉरगिवनेस करना है। नाउ आई एम कमिंग टू द हीलिंग पार्ट, कैसे हील करना है। When you want to heal your karma or when you want to heal your karmic problems, there are 4 things that you need to do. अपने कर्मा को हील करने के लिए, especially if you're going through a relationship problem, 4 चीजें करनी है। First thing is identify and accept your responsibility. जो मैंने पहले भी कहा, आप जब तक ब्लेम करते रहोगे, आप जब तक कर्स करते रहोगे, तब तक आप नया नया नेगेटिव कर्मा जनरेट कर रहे हो, पुराना तो टच भी नहीं होगा। So first is identify and take responsibility for whatever is happening in your life right now, good and bad. The moment you identify, some part of your karma is healed then and there. वहीं पे हील हो जाता है थोड़ा सा कर्मा। जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, यार ये प्रॉब्लम मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ गलती की है। If you are an arhatic yogi, you must be understanding what technique am I talking about. Reflect. A great tool which has been given in arhatic yoga itself. When you reflect, थोड़ा सा healing वहीं हो जाता है कर्मा का। When you identify that, yes, it was my mistake, I have done something wrong, maybe with not this person, maybe with another person, that's it. One part of your karma is healed there and there. Second point,
Forgive the people who are troubling you now. Forgive the people who are troubling you now. Maybe in a relationship, a person who is betraying you now, a person who is making you cry now, a person who is torturing you now, a person who is dominating you now. मन नहीं करेगा उसको फॉरगिव करने के लिए, बेशक नहीं करेगा, लगेगा कि यार यही इंसान मेरे को इतना तकलीफ दे रहा है, इसी को माफ करने बोल रहे हैं, क्यों माफ करूं? Right? Normal thought form. Why everybody will have this thought form? Why should I forgive this person? This person is troubling me so much. But there is no way out. No way out. If you don't forgive the person, you and that person will be bound in a chain, in a karmic chain. अच्छा लगेगा जो इंसान आपको रुला रहा है, उसी इंसान को गले से लगा के जिंदगी भर 24 घंटा 365 दिन घूमना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। यूजुअली हम लोग कोशिश करते हैं जो इंसान हमें हर्ट कर रहा है वो हमारे हमको शक्ल भी ना दिखाए, लेकिन अगर आप उनको फॉरगिव नहीं करोगे, यू विल बी बाउंड टू दैट पर्सन, कंप्लीटली बाउंड, ऐसे ही घूमना पड़ेगा उस इंसान को लेके। आई एम श्योर यू विल नॉट लाइक इट, राइट? सो नंबर सेकेंड पॉइंट इज फॉरगिव द पर्सन हु इज हर्टिंग यू नाउ, करंटली, जो भी आपके साथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम में इस वक्त है, maybe your parents, maybe your brother, sister, maybe your spouse, maybe your children, maybe your colleague, maybe just a friend, maybe your neighbor, anybody. Number three, third part of healing, ask for forgiveness. Ask for forgiveness because, as I already said, it is our own karma which is coming back to us in the form of this relationship problem. It is our own karma which has resulted, matured into this kind of a relationship problem. We need to learn the lesson. So ask for forgiveness. अब आप सोच सकते हो कि इस इंसान को तो मैंने कभी तकलीफ नहीं दी है, फिर मैं माफी किस बात का मांगू? Connect to the soul, to the incarnation, not to this present incarnation. हो सकता है इस जन्म में आपने उस इंसान को कोई तकलीफ नहीं दी, but it is the soul which has come back to you to take revenge. आपने प्रीवियस इनकारनेशन में कोई गलती की होगी, हर्ट किया होगा, पेन दिया होगा, टॉर्चर किया होगा, ट्रॉमा दिया होगा, तभी ये सोल इस जन्म में घूम के आया है. सो यू हैव टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस एज वेल फ्रॉम द सेम पर्सन हु इज हर्टिंग यू. Then your previous karma will get neutralized. Then your previous account will get settled. एंड जरूरी नहीं है कि आपको सामने जाके उस इंसान से माफी मांगना है. मे बी दैट पर्सन हैज डाइड, मे बी दैट पर्सन इज नॉट इन द फिजिकल बॉडी एनी मोर. Even then you can do the forgiveness to the soul, because if you don't do the forgiveness, this soul is going to again take a birth and come into your life and again torture you. But if you do the forgiveness, then the soul will get freedom, will go away from you, not come back to your life with torturous intentions. And last but not the least, the fourth point, the meditation and blessing. You need to do the twin heart meditation regularly. Twin heart meditation is one of the biggest tool. It is like a weapon. It is like a magic. It is like a miracle. It is like God's blessings, which can heal your relationships. आप किसी भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, अगर आप ट्विन हार्ट मेडिटेशन करते हो एंड मेडिटेशन करके आप सामने वाले को ब्लेस करते हो, when you bless the person who is hurting you after the twin heart meditation, your relationship karma will heal. When you do the forgiveness, it is like taking out the wrong seeds that you have put into the soil. When you do the meditation and you bless, it is like putting the right seeds into the soil now. Forgiveness करने से आपका जो पुराना नेगेटिव कर्मा है वो न्यूट्रलाइज होगा. ब्लेसिंग एंड ट्विन हार्ट करने से आपका जो नया सिचुएशन है उसमें आप सही सीड सो कर रहे हो. गुड सीड, लव का सीड, फॉरगिवनेस का सीड, मर्सी का सीड. तो योर नेगेटिव विल गो डाउन, योर पॉजिटिव विल कम अप, and ultimately you will be at a positive balance.
Okay, so this is extremely important. The fourth step process to heal your relationship karma. आप किसी भी रिलेशनशिप कर्मा से गुजर रहे हो, आपको ये चार चीजें करना बहुत जरूरी है. नंबर वन इज टेक responsibility, identify your mistake, whether of this incarnation, whether of previous incarnation. Previous incarnation को identify नहीं कर सकते, सिर्फ responsibility ले सकते हैं. Number two, give forgiveness. Number three, ask for forgiveness. And number four, the twin heart meditation, and bless the person with lots of love, with lots of mercy, with lots of forgiveness. Now, I have a question in the chat box that even if I have done so much of forgiveness, in spite of doing a lot of forgiveness, visualizing that relationship is getting better, the more you find challenges from that person, and that person still finds some or other way to put you down. I understand that, Ankur, but again, as I said, there is a time of maturity. मैं ये नहीं बोल सकती कि आप 10 दिन forgiveness करो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या आप 10 महीना forgiveness करो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. You have to see how much karma have you created in your previous incarnation. अगर एक इंसान 10 दिन से भूखा है, तो क्या वो उसकी एक रोटी से भूख चली जाएगी? लेकिन अगर एक इंसान पिछले 10 घंटे से भूखा है, तो हो सकता है एक रोटी खा के भी बोले अरे चलो आई एम फुल, आई एम डन, राइट? So it depends on your past karma also. I exactly do not know what is stopping you from converting that karma. You need to again inner reflect. Am I generating negative karma now? सबसे पहला बात, ये जो थॉट फॉर्म है कि सामने वाला मेरे को चैलेंजेस दे रहा है, ये थॉट फॉर्म भी आपको बदलना होगा. सामने वाला आपको चैलेंजेस नहीं दे रहा है, सामने वाला सिर्फ बार बार वो टेस्ट उठा के लेके आ रहा है. सामने वाला सिर्फ एक माध्यम है, भगवान ने भेजा है कि जाओ जाके उसका टेस्ट लो, वो फॉरगिवनेस कर रही है, देखते हैं कितना प्यार भरा है उसके अंदर. जिस दिन चैलेंज आएगा बट आप उसको चैलेंज नहीं समझोगे, उस दिन आपका लेसन ओवर हो जाएगा. Visualization will help you definitely. Send positive energy to the person. If that person is connected to you in a blood relationship and you are a pranic healer, actually do the healing for the person. अगर आपको पता है कि सामने वाले का प्रॉब्लम क्या है और अगर वो कार्मिकली आपसे कनेक्टेड है, आपके ब्लड रिलेशन में है या आप उसको हील कर सकते हो, एक्चुअली लिफ्ट योर हैंड, टेक द क्रिस्टल, डू द हीलिंग फॉर द पर्सन. मे बी योर कर्मा विल चेंज वेरी फास्ट. Again, check whether are you giving forgiveness and asking forgiveness sufficient number of times. Now, very recently, I was speaking to some people and they said they are doing one forgiveness in a day. एक बार forgiveness कर रहे हैं उनके साथ मेरे ही सेशन में शायद बैठ के. My dear friends, this is not enough. जो मैं सेशन में करा रही हूँ वो सिर्फ एक आई ओपनर है. You have to practice minimum 7 days, 7 times. That is the minimum. 7 days, 7 times with one single person. अगर ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो 7 days, sorry, 7 times into maybe 50 days, maybe 1 month, 2 months, 3 months, depending on the karma that you have generated. So one time forgiveness is not enough, huh? Don't think कि प्याली एक बार सेशन में forgiveness कराती तो एक ही बार करना. एक बार सिर्फ एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एक like a kind of like sample forgiveness है ये. इस सैम्पल फॉरगिवनेस को करके अंदर उतार के फॉरगिवनेस करना ही क्यों है. मिनिमम 7 days, 7 times. That's the bare minimum. Which session I have already taken? I have a whole bundle of sessions, 7 days, 7 times of forgiveness. So you have to see कि how much do you need. कितना भूख है उसके ऊपर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कितना रोटी बनाना है आपको. Taking responsibility at times converts into self-blaming when the situation comes again and again in front of you. How do you deal with it? Doing forgiveness and twin heart meditation. Yes, sometimes it becomes like a self-blaming. Do not go into self-blaming. So जब हम लोग twin heart में जब हम लोग forgiveness करते हैं, which I will do right now, we will practice once. The first thing we say is, Atma Namaste, I salute the divinity within you. We are all children of God and we all make mistakes. That's the first, second line that we say in the forgiveness prayer.
You have to say that even I am a child of God and even I have made mistakes. It's okay. उसको सुधार रही हूँ. I'm going, I'm going to change. I'm going to become better. So as soon as you say that everybody is a child of God and everybody makes mistakes, it's easy for you to forgive others. It's easy for you to even forgive yourself. So do not go into guilt. बड़े से बड़ा problem भी अगर है, do not go into guilt. There's a beautiful saying that God loves the good, God loves the bad, God loves the worst. इस दुनिया में जो सबसे बुरा इंसान है, उसको भी भगवान प्यार करता है. तो जब उसको भगवान प्यार कर सकते हैं, तो हम तो उतने भी बुरे नहीं है भाई. So we can do it, right? So I'll take up more questions as the session goes on. Let's start with the forgiveness and the meditation so that our relationship can start getting healed from this moment itself. Okay? So I will request everyone, please close your eyes. Put your hands in front of your heart and try to see the person who is hurting you the most right now. एक इंसान, एक सोल इस वक्त जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा हर्ट एंड पेन दे रहा है आपको, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रिलेशनशिप आपका जिसके भी साथ है अभी. So just visualize that person in front of you. Look into their eyes and slowly visualize the person is turning into a light. इंसान का शरीर एक रोशनी में बदलता जा रहा है. Gently say आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते. I, the soul, humbly salute the divinity within you. हम सब के अंदर ईश्वर बसते हैं. मैं आपके अंदर के ईश्वर को नमन करती हूँ. We are all children of God and we all make mistakes. I forgive you. I forgive you. I forgive you for all your mistakes, for all the hurt and pain that you have ever caused to me in this incarnation, in every incarnation. मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए माफ कर देती हूँ. You are forgiven. I forgive you for now and forever. For whatever physical, emotional, mental, verbal, sexual, financial, and spiritual hurt and pain you have caused to me. You are forgiven. I forgive you because I realize it is my own karma which is coming back to me. You are not the real reason. You are just the medium selected by God. So I forgive you. I forgive you. Go in peace. Again, look into the eyes of the person. Look into that bright white light and say, Atma Namaste. I, the soul, humbly salute the divinity within you. We are all children of God and we all make mistakes. Please forgive me for my mistakes. Please forgive me for all the hurt and pain that I have given to you. जाने अनजाने अगर मैंने आपको कोई तकलीफ दी है, दर्द पहुंचाया है, इस जन्म में या किसी भी जन्म में, प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए. I am truly, deeply, sincerely sorry for my mistakes. May the Supreme God bless us with love, mercy, and forgiveness. May the Supreme God neutralize all our negative karma. May peace be with you. May peace be with me. Om Shanti 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 Om. Imagine if there are any negative cords between you and that person, they are all being cut, cut,
heart. Now, together, we shall invoke that the beautiful energy of the twin heart meditation is going to heal us deeply and thoroughly, heal our relationship, heal our auras and chakras, heal our karma. We, the soul, accept our mistakes and we let go all negativity connected to it. We forgive ourselves and we forgive others. In full faith, so be it.